Okay. So we can start now. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So our today's topic is e-invoice and eBay. Uh, so the first, what is e-invoice and what is eBay? So the government has mandated the e-invoice for the farmers, for the businesses that has the turnover greater than 5 crore annually. So what is invoice? Basically, whatever business you do with the other business, other B2B business with the GST number, that you have to report to the government directly. So that is called e-invoice. आप ईआरपी में तो बिल बनाते ही हो, ठीक है, अपना स्टॉक जो डिडक्ट होता है और लेजर जो मेंटेन होते हैं वो ठीक है। बट अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 5 करोड़ से सालाना, तो आपको गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने इस बिजनेस के साथ इतना बिजनेस किया है, इतना बिल बनाया है, तो वो बिल आपको गवर्नमेंट में पुश करना रहता है। तो उसके लिए ई इनवॉइस होता है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी कस्टमर को क्रेडिट देना चाहते हो, इनपुट क्रेडिट, राइट, you are selling him as a B2B, but he wants to take the credit on the purchase. मान लो कि आपका कोई भी B2C वाला कस्टमर है, बट वो बोलता है कि सर मेरे पास जीएसटी नंबर है कंपनी का, मेरे को क्रेडिट लेना है, तो उसके लिए भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। ये ई इनवॉइस बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, देयर इज अ गवर्नमेंट पोर्टल, ई इनवॉइस पोर्टल। वहां पे जाके आपको आपका जो भी बिल है, वहां पे जाके आपको मैन्युअली आइटम्स एंटर करना होता है। यू नीड टू एंटर द आइटम्स मैन्युअली on the invoice portal and the invoice number. So that process is tedious and same as e-way. So what is e-way bill? So basically when the goods transport from one place to another, there are two conditions in it. If it's transporting within the state, in the same state, and if it's worth greater than 50,000 rupees, then you have to create e-way bill. So whenever the uh, road transport department approaches you, you have to show the e-way bill of of your goods, that this goods I am transporting from this location to this location. And if it's in a different state, assume it's in from the Gujarat to Rajasthan, Gujarat to Maharashtra, Gujarat to Karnataka. So in that case, you compulsory need to make e-way bill if you are dealing with the B2B businesses. So for that, e-way bill is there. But if you are using the outside transportation, you are outsourcing your transportation service, I mean, किसी के through भिजवा रहे हो, then they will make the e-way bill for you. So this is only for who has the इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो खुद का ही अगर गुड्स भेजते हैं अपने खुद के ट्रक में, तो फॉर दैट ई वे बिल इज मैंडेटरी. So for both of them, what you need to do is need to go to the government portal, need to upload the items and invoice number, and then you can create the e-way bill and e-invoice bill. तो आपको वहाँ पे जाके आइटम्स डालना पड़ता है, इनवॉइस नंबर डालना पड़ता है, सेम जो यहाँ पे ईआरपी पे करते हो सेम वैसे ही करना पड़ता है, एचएसएन कोड डालना पड़ता है, उसके बाद आप ईवे इनवॉइस बिल बना पाओगे. तो टू मेक दिस प्रोसेस स्मूदर, व्हाट eVitalRx हैज डन इज ही डिड द इंटीग्रेशन विद द एनआईसी पोर्टल. तो हमने सीधा गवर्नमेंट से इंटीग्रेशन कर दिया है. सो फ्रॉम दैट यू क्रिएट बिल एट ओनली वन प्लेस, आप एक ही जगह पे बिल बनाओ, देन यू पुश इट डायरेक्टली टू द एनआईसी आफ्टर द कंफर्मिंग द बिल दैट दिस इज द फाइनल बिल आई वांट टू पुश. ठीक है. Okay. So e-way invoice overall objectives are it's easier to manage your GST and e-way bills. Uh, GST reconciliation gets smooth. There is the less chances of the tax evasion, reduction of tax evasion, and efficiency. You get the efficiencies tax administration. So after this integration, you will get the seamless connectivity with the NIC system. जो भी अगर मैन्युअल एरर होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे अमाउंट कुछ और डाला है और शायद पोर्टल पे जाके कुछ और अमाउंट हो जाए, तो दोज काइंड ऑफ एरर्स मतलब आर नॉट इन दिस केस.
and process flow e-way bill. Okay, so I'll walk you through the demo of e-way and e-invoice integration, how we have done the integration. So everyone can see my sales screen, B2B screen. Yes, it's visible. Yes. So here there are multiple ways to create the e-way and invoice. We'll go to the sales B2B sales bill. Then here we have the more option. Here the e-way invoice tab is given. So you can click on this button, and if HSN code is empty, we'll get the pop-up that this item don't have the HSN code. Okay. So I'm writing the dummy HSN code here, and update buyer pin code. So I need to enter all the details that are required by the NIC. So I'm choosing a bill which has less details. Okay. So we'll get this kind of pop-up. So in that you can select push to IRP means e-invoice, or you can uh, create the e-way, और यू कैन क्रिएट द बोथ. सो आप एक ही सिंगल टाइम पे आप दोनों क्रिएट कर सकते हो अगर आपको दोनों का रिक्वायरमेंट है, ई वे इनवॉइस दोनों. अगर मेरे को सिर्फ ई इनवॉइस करना है तो मैं यहाँ पे ई इनवॉइस सिलेक्ट करके डायरेक्ट सबमिट कर दूंगा. इफ आई वांट टू क्रिएट ओनली ई इनवॉइस, I can click here push to IRP and I will do the submit. If I want to do both IRP and e-way both, so for the e-way I need to enter the GST number of the transporter and the vehicle number. This both are required. अगर मेरे को ईवे और इनवॉइस दोनों करना है तो ईवे के लिए रिक्वायर फील्ड है कि मेरे को ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालना है और व्हीकल नंबर डालना है. दिस थिंग्स फॉर द मोर स्मूदर मैनेजमेंट वी हैव गिवन इट इन द लिस्टिंग फ्लो. तो यू कैन क्रिएट द बल्क ई इनवॉइस फ्रॉम हियर. लेट्स से आई एम चूजिंग द बल्क ई इनवॉइस ऑप्शन. ठीक है. So the all the bills which are eligible for invoice that come into the front, right? Draft will not appear here. Draft है वो सारे यहाँ पे नहीं आएंगे, बट जितने भी बिल लिस्टिंग में है उतने बिल यहाँ पे आ जाएंगे ई इनवॉइस क्रिएट करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे आप साथ में ईवे भी क्रिएट कर सकते हो. वो करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट ईवे का चेकबॉक्स टिक करना होगा. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सारे बिल सिलेक्ट कर लूंगा, देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट. सो इट विल call the NIC portal and it will submit the request for the e-invoice. Okay. So on submitting request, it will first do the validation check. So the some message had appeared that this invoices are paid. So to check the message why these invoices are paid, I will click on it. So after clicking on it, I get to know that buyer GST number is not here in the this bill. मतलब इस बिल में बायर का जीएसटी नंबर नहीं डाला हुआ है. तो ऐसे जो भी वैलिडेशन है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से. एंड यहाँ पे सिटी नहीं डाला हुआ है. सो ये अपडेट करने के बाद यू कैन अगर आपका जो भी परफेक्ट है इनवॉइस होलसेल बिल B2B बिल जहाँ पे पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, देन इट विल गोइंग टू बी सबमिटेड ऑन दी NIC पोर्टल. सी हियर, क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, सो I am not able to create the e-invoice bill in this account. But this is the option that how you can create the e-invoice and e-way. Also we had given the filter कि अगर आपका e-invoice और e-way जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है. तो मान लो कि आपको ये देखना है कि मेरे कितने इनवॉइस बाकी है. सो यू सिलेक्ट ऑन इनवॉइस जनरेटेड नो एंड यू क्लिक टू अप्लाई. So it will show how many invoices pending. So this is the demo. E-way and invoices are exactly same. Only the e-way requires the transportation GST number and the vehicle ID.
So we will move to the questions and answers. Yes, Arvind sir, please tell me. अभी मैंने B2B का इनवॉइस जनरेट किया। मेरे पास Okay, ट्रांसपोर्ट का मेरा खुद का गाड़ी है एक। okay. मैं किसी को ट्रांसफर को नहीं दे रहा, तो वहां Hmm. पर ट्रांसफर का जीएसटी नंबर नहीं होगा ना मेरे पास में। ओनली फॉर मेरे पास व्हीकल नंबर रहेगा उसमें। But तो sir, वो you कैसे जनरेट होगा? you have your own transportation, right, sir? हाँ, मेरा खुद का ही गाड़ी है। सर तो you need to give your own GST number to that. अगर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है तो आप अपना जीएसटी डालोगे। नहीं, खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है अपना, मेरा खुद की गाड़ी है कि ट्रांसपोर्ट एक अलग है गया बेसिक। हम्म। मैं कहीं खुद की गाड़ी या किसी जो पार्टनर है या ऐसी कोई गाड़ी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं वो मंगवा कर फिर मैं गुड्स भिजवा रहा हूँ, तो वहां पर कैसे करेंगे वो सर अपडेट? देर आर फर्स्ट टू कंडीशंस कि अगर आइदर आप गुड्स भिजवा रहे हो वो सेम स्टेट में है कि डिफरेंट स्टेट में। सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है सर, करंटली सर दोनों में। आर यू जनरेटिंग ई वे बिल? नहीं, अभी मैंने जनरेट नहीं किया ओके, ऐसा। मैं मैन्युअली बनाकर फिर भेजता हूँ। ओके। So in that case, sir, your GST number will come in the transportation GST. क्या सर? आपका खुद का ही मतलब खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना सर? हाँ, मैं बाहर से अरेंज करके फिर मैं जा रहा हूँ कुछ, तो थोड़ी वहां आवाज पर जीएसटी नंबर वो। हाँ। आपका खुद का आएगा सर, क्योंकि आप खुद ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। आपका व्हीकल नंबर भी आपका खुद का आएगा, आपका खुद का गाड़ी है तो। और ट्रांसपोर्टेशन नंबर भी नहीं, मैं आपको बाहर से कोई अरेंज कर रहा हूँ गाड़ी का, मैं बाहर से अच्छा, अरेंज बाहर से कर आप रहा हूँ अरेंज गाड़ी। अरेंज कर रहे हो। हाँ। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम्म। एक नॉर्मल वो गाड़ी रहता है ना, ऐसा। ओके, ओके। तो उससे आप जहाँ से गुजरता हूँ, अरेंज कर रहे हो तो सर, वो अपडेट। अरेंज कर रहे हो, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब उनका जीएसटी नंबर आना चाहिए। वो नंबर नहीं हो तो नहीं है उनके पास। तो सर उस केस में तो आप ईवे नहीं बना पाओगे। अगर ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर होगा तो ही आप ईवे बना पाओगे सर। नॉर्मली क्या रहता है ना, जो गवर्नमेंट की साइड रहती है जीएसटी हम्म, की, वहां पर हम्म। ओनली फॉर गाड़ी नंबर डालकर आप जनरेट कर पा रहे हो ओके, विदाउट जीएसटी नंबर। ओके, ओके सर। सो मैं चेक कर लूँगा कि विदाउट जीएसटी नंबर अगर हो सकता है। इफ दैट इज पॉसिबल वी विल डू इट। ओके, आई एम नोटिंग ओके डाउन द सर। रिक्वेस्ट। ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो? हेलो। हाँ हाँ। सर, सेंट्रल फार्मा से। यस सर, बताइए। क्या होता है ना, हमारे सब जीएसटी बिल आते हैं हमारी फार्मेसी को, जितने भी हम परचेस करते हैं सप्लायर से। हम्म। उसमें से एक या दो सप्लायर हैं जो हमें ईवे बिल करके हमें एसएमएस आता है। ओके। तो इजी टोके या हम उनको बताना चाहिए कि हमें ईवे बिल नहीं चाहिए, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, या ऐसे ही छोड़ दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ नो, ऐसा नो, है नो। क्या उसमें? इसमें क्या है कि जो सेल करता है उसकी उसकी एलिजिबिलिटी होती है सर। मतलब वो आपको ईवे का एसएमएस आ रहा है तो वो सेल कर रहे हैं तो वो भेज रहे हैं बना के। जी जी। मतलब आप अगर बायर हो तो आपको उसके बारे में कोई मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इट्स हम्म कम्प्लीटली फाइन। अगर जब आप हम्म एलिजिबल हो जाओगे तब हम्म आपको ईवे बनाना पड़ेगा। हम्म तब तब आपके कस्टमर को मैसेज जाएगा आपकी तरफ से। हम्म।
तो फॉर नाउ वी आर नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे, तो इज इट E-way, ओके, इज इट फाइन कि it's हम fine, sir. It's fine. If you are ओके, transporting the goods, if you are selling goods to the we are B2B customer, receiving we are you are receiving, receiving stock from our suppliers. then it's fine, sir. No issue. Okay, thank you. Sooner or later, this limit will also going to decrease. At first, the limit was when introduced. I think the limit was around 25 crores annually turnover. So जो वो 25 करोड़ थी वो गिर के 5 करोड़ तक आ गई है, और धीरे धीरे मतलब वो कम, गवर्नमेंट विल कीप ऑल द बिजनेसेस अंडर द ई इनवॉइस, मतलब लिमिट कम कर देंगे धीरे धीरे धीरे। अभी तक 25 से 5 कर दिया है। Okay, okay. यस सर, गोयल मेडिकल सर। मानव जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 5 करोड़ का जो टर्नओवर है वो है ना, उसमें B2B सेल के लिए है या B2C सेल में भी ये शामिल है? बोथ सर, बोथ। बोथ। अच्छा, B2C में भी है, मतलब कस्टमर को भी चाहे उसके पास जीएसटी नंबर है तो भी, नहीं है तो भी उसको हाँ 5 करोड़ से यस। ऊपर करना ही होगा। हाँ बट आपको और ई दूसरा इनवॉइस, जैसे, ई इनवॉइस सर उनका ही बनाना है जिसका जीएसटी नंबर हो। अच्छा, बनाना उनका ही है, पर वो टर्नओवर 5 करोड़ के से हाँ मतलब इंक्लूड करा जाएगा, है ना? यस। और दूसरा, अगर वेयर हाउस अपनी ब्रांच को अगर सप्लाई करता है तो वो तो B2B सेल नहीं होती, वो तो ट्रांसफर होता है। उसमें भी ट्रांसफर ये होता है सर। तो उसको तो सेल में इंक्लूड नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर, नो सर। कंफर्म है? उसके लिए हाँ, उसके लिए कंफर्म है, उसके लिए इनवॉइस नहीं बनता सर। उसके लिए आप ईवे हाँ, बना सकते हो, अगर आपको ट्रांसपोर्ट हाँ, कर रहे हो गुड्स, हाँ। तो ईवे आपको बनाना पड़ता है, बट आपको इनवॉइस नहीं बनाना पड़ता। Manav, if it's a branch but with different GST, then आज it कट would गई be थी, दोबारा बताइए। considered B2B, right? हाँ, then it would be you create, then e-invoice is mandatory if your branch has different GST number. If your branch has नहीं, same अगर GST, सेम पे नहीं होता सर, सेम सेम पे जीएसटी नहीं पे, होता। हाँ, सेम पे ई वे बिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेम पे मुझे ईवे लगता है का वो क्योंकि जरूरत, सेल में, ईवे का हाँ, सर जरूरत पड़ेगा उसको, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा का गुड्स, और या हाँ, फिर आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जरूरत हाँ, पड़ेगा ईवे का। हाँ। पर अगर एक ही सिटी में सेम सेम जीएसटी पे कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ईवे की भी जरूरत नहीं है और ई इनवॉइस की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका मतलब जो गुड्स है वो 50,000 से कम का होगा तो आपको ईवे का जरूरत नहीं है, मतलब एज पर दी लॉ, हाँ, मतलब हाँ, एज पर दी लॉ। हाँ, हाँ एज पर दी नहीं, लॉ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब सेम जीएसटी में माल ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सेल तो माना ही नहीं जाएगा ना, उसको तो एज पर जीएसटी लॉ तो वो ट्रांसफर है केवल। तो पांच ट्रांसफर है करोड़ का सर। क्राइटेरिया तो उसका तो क्राइटेरिया 5 करोड़ का हुआ ही नहीं ना फिर। नहीं, 5 करोड़ का क्राइटेरिया सर ई इनवॉइस के लिए। ई इनवॉइस मतलब गवर्नमेंट को क्या बताना है कि आपका कितना सेल हो हम्म, रहा है। ईवे का क्या है कि हाँ, ईवे का पर्पस हाँ, डिफरेंट है। ईवे का पर्पस ये है कि कौन सा माल कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, कितने रुपए का। तो हाँ, गवर्नमेंट उससे दूसरी चीजें ट्रैक करती है, वो आपका सेल ट्रैक नहीं करती। गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर आप कोई किसी किसी गुड्स को हम्म, ले जा रहे हो तो शायद हम्म, कोई चेकिंग आती हो, आपको आपको पता होगा शायद हम्म। कि कोई अगर चेकर आता है तो वो बोलते हैं कि आप ईवे बिल दिखाओ, आप इतना माल ले जा रहे हो, तो ईवे बिल से वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये गुड्स से ट्रक में पड़े। तो नहीं, मैं वो मान गया, आप ई वे बिल का तो समझ में आ गया, मेरे ई इनवॉइस की बात कर रहा हूँ मैं तो। ईवे इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि वो तो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हो गया। वो सेल है ही नहीं। ओके, नहीं है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सर, अरविंद सर बताइए। सर कुछ गाँव के सेंटर जा रहा है उसके फार्मेसी पर जाएगा। सर आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई कीजिए। हेलो, हाँ। हमारे एक ही जीएसटी नंबर से करीबन 40 किलोमीटर दूर दूसरा ब्रांच है, वहां पर 50,000 से ऊपर का जाएगा, तो जो बनेगा ईवे बिल वो इसी में से जनरेट हो पाएगा या मैन्युअली जनरेट करना पड़ेगा? क्या है ना, वो ऑनर फॉर यूज रहता है,
खुद का जीएसटी, तो वो यूजर से डिलीवरी चलन में बनेगा या डॉक्यूमेंट चलन में बनेगा वो? शायद सर इतना आइडिया नहीं है, बट वो चलन के ऊपर ही जीएसटी बनता है सर। अब वो सिस्टम में से ऑटो बनेगा या हमको क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए कुछ उसका अलग दिया हुआ है सर, या? उसके लिए सिस्टम में नहीं सर ऑप्शन दिया गया है, मतलब मैन्युअली आपको बनाना पड़ेगा। ओके। Okay, any other questions? Okay, if there are no other questions, we can conclude the call. Okay. Thank you.